him over. First Cherry. Great Yorker. Kasim Omar, who played so well in the defeat of the West Indies the other evening, has gone without scoring, and India are right on top. Sheer pace, swinging Yorker, new batsman, beautiful line, pitched about middle leg, swung in a bit, hitting across the line, took off stump. Beautiful piece of bowling by Kapildev. He's on a hat-trick, Pakistan reeling as Omar departs without scoring. And what a buzz around the Melbourne cricket ground. 3 for 29. Me and Dad, as Kapildev comes in from the southern end. What a good ball. Gave the batsman a bit of a shock there. Nicely placed, and it'll go for 4. It'll get onto those practice pitches down there and race away from the fielder. Glorious stroke from Javed Mir. Perfect reply to a loss of 3 quick wickets. 33. Kapildev has the lot. Here's Raja. Watching slightly after the fall of the first wicket, Mohsin Khan. He's still there. Here's Raja batting in the white cap. Javed Mir in the blue. Got him. He's waited for the decision, but he's going now. Ramesh Raja brilliantly caught. Magnificent catch by Srikanth just behind square. Mohammad Azharuddin was in that area. Srikanth has gone there now and pulled off a brilliant catch that has the Pakistan team rocking. Timed that beautifully, but didn't keep it down and flew to backward square leg. It was an inch above the ground. Just carried, caught it as clean as a whistle. What a performance by the Indians, catching everything, supremely confident. He was a key man. Raja departs, and now Pakistan, 4 for 33. Imran Khan, 32 years old, one of the great all-rounders in the world today. Comes out at a crucial moment for Pakistan and their fortunes. Khan's not moving, Vishwanath is. He's racing up, and Imran Khan just wasn't interested, nor was umpire Ray Isherwood. Well, I don't know why, because it looked out to me, umpire Ray Isherwood, standing in this final, went for the hook shot, sounded like a glove or something, and now let's watch this closely. Oh, the big deflection. I'd say that was an umpiring mistake. It's Vishwanath, the bowler, all the fieldsmen go up. Imran Khan stands his ground in a controversial moment in the World Championship of Cricket, MCG. In a one-day game where Australia hasn't been a participant, the record crowd previously was 30,109. Vancode. Watch live sports. Install it now. Attendance looks to me as though in all it will get up to around about 250,000 for this competition today. Thereabouts. The previous highest ever total attendance for a World Cup competition in England, that's where the World Cups have been played, 75, 79 and 83. It's around 235,000, so that could get knocked off today as well. Bear in mind that was 1983, where each team played the other teams twice. Safely away past the left hand of Bharat. Sivarama Krishnan. Straight down the ground, beautiful shot by Imran. Straight drive, it was in the air.
very firmly, and it was 4 from the moment it left the bat. Warner shy at the stumps down there, hits them. Question asked, it must have been pretty close, but Imran very quick. Let's have another look at that, see if Imran had got himself in. It's a little slow moving, but had that bat grounded and made it comfortably there. If there's any big hitting to be done, Imran will probably be the man expected to do it. Here, they'll be looking for 2. And that's a good indication of the way these two play. Amarnath to Javed Miandad. Oh, good delivery. An appeal from the keeper, Vishwanath. But I think he might be overdoing the appealing a little bit in memory of what happened with Imran earlier. No emotion at all from the bowler, and Vishwanath gave it the big shout, but that didn't appear to be a catch. We'll have a good look at it on replay. A little bit of noise there. The umpire Ishwood not moved, but certainly there was a noise. Still a defensive offside field of 3 in the circle. Point, cover and mid-off, very square. Late cut there from Javed, a shot that he plays particularly well. He's coming back for the second, and that is good running. Shastri has no slouch in the field at all. Almost cut that ball out of Vishwanath's gloves. He played it very late. Fine. Run rate's not high, it's 2.52, but they've stopped the fall of wickets. They've consolidated the situation slightly for Pakistan. Must bat through the 50 overs, that's the first criteria. You lose early wickets. There's the pull shot, bouncing just in front of Azharuddin. Got a very awkward bounce on that rough pitch area. Good return from Ben Sarkar, but once again the running is good. Running was excellent. In fact, Imran could have been in trouble, except that ball didn't carry on the fall, and once it hit the turf it slowed down, but it was aggressive running from the start. That's a beautiful stroke. There to cover. Imran Khan starting to cut loose. Pakistan supporters can breathe again for a moment anyway. A glorious stroke there from Imran Khan, and plenty of food for thought for Sunu Gavaskar. Safely away, although a rather thickish outside edge. They'll get 3 there. Javed will come back very quickly. From an Indian point of view, it's going to be very interesting to see when Sunil Gavaskar brings into the attack Laxman Sivaran Krishnan. That's one of the penalties of standing up over the stumps. Yes, he's been very aggressive with his keeping. Stick bounce there. Feeling there may have been some bat on that. Bounced way over the top of the shoulder. Couldn't pick anything up there. Consultation between 2 very grim-faced cricketers. They know there's still a lot of work to be done. 31 to Javed, 35 to Imran Khan. This is the 34th over. There's going to be a change now to the attack, and this will be very interesting. Laxman Sivaramakrishnan being brought into the attack. He's the 6th bowler used by the Indians. One. Trouble. Stumps out. Imran Khan gone. Tragedy there as far as the Pakistanis are concerned. Imran Khan and Javed Miandad a misunderstanding. Imran looking for the single.
And a lovely pick up and throw. Yes, there was no run here. Imran called for it. I don't think there was a run, and he had to go back very quickly. Direct hit there, and had they run, I reckon Javed would have been out by 3 or 4 yards. So Imran perhaps calling incorrectly, and that's a big blow for the Pakistanis. He's out for 35, and a lovely bit of fielding there by the Indian captain. Pakistan 5 for 101. Javed on 35. Salim hasn't been there long, just one. 35 overs gone. It's a full toss and hit away into the gap at square leg. It won't go for 4. Mohammad Azraddin moving around there from deep mid wicket. They'll take the single there off the pad. They're going to look for 2. There, 5 for 113 in 36 overs. In 5 for 113, Javed 37, Salim Malik 7, Ravi Shastri to bowl, here's Bill Lorry, and with him Frank Tyson. Thank you, Richie, and a good sweep shot from Javed. That's 4 runs. One that left the bat, beautifully played. Shastri being somewhere around about middle leg stump, and he put it away. Sivaramakrishnan to Salim Malik. It's in the air, he's got him, he's dropped it. Straight to Shastri. At cover, he played for that. It was a beautiful piece of bowling, and the wheels fell off there for Ravi Shastri. He should have caught that. It was a hard hit ball, but it was deep. He moved to it, put it down. And this is what happens when you lean back on a drive such as that. It was just to the left of Ravi Shastri. He's normally the most reliable of fieldsmen. This is the 39th over. They've got 5 wickets in hand. Their target possibly would be between 8 and 10 runs per over from here on into the 50th over. It's well played. He waited very late to cut that fine. Racing away towards the boundary. Armanath Fields. 3 runs. It's as though Sivaramakrishnan will not bowl out his 10 overs. Dev and Sharma still 6 overs to bowl between them. It's in the air, there's a man out there, he's getting under it. Sharma's got it, has he? Yes, he has. Well caught. Sharma not making the same mistake that Ravi Shastri did at cover. Took a well-judged running catch, and the leg spinner strikes again. And that's been fairly typical of the standard of out cricket played by India in this championship. It wasn't a very good stroke. Salim Malik has been hitting his drives in the air. He wasn't to the pitch of that. He lofted it to the long off position, and that was an exceptionally well-judged catch by Chetan Sharma. Again, moving around the boundary and getting right underneath it. It never looked like dropping. 6 for 1 field. Hard-hitting batsman. He replaces Salim Malik. Hold out it deep long off to a good running catch by Sharma. Now the leg spinner comes into Javed as they crossed. He's gone, is he? It's a good effort. No, he's got him. What a good piece of bowling. An excellent leg break. Got him forward and spun a mile. Vishwanath had the bails off. A brilliant piece of cricket. And it looks as though India are going to bowl yet another side out with Sivaramakrishnan now on the hat-trick. That was a superb leg spinner to defeat a man of the calibre of Javed Miandad, who normally gets very close to the pitch of the ball. Is a mighty feat, and the last hat-trick, indeed the only hat-trick to be performed in one-day internationals, was by Jalaluddin, Pakistan against Australia in Hyderabad in 1982. So Miandad out for 48, 7 for 131. Catch the batsman. He goes for the big hit. There's a man down there. He's getting under it. It's Armanath. He doesn't get back in time. Dear, oh dear, it crashes into the fence. Could have been a hat-trick. He was some 10 metres into the fence. He hit it straight. What a courageous shot. The crowd's gone mad at the Melbourne Cricket Ground. And that was an amazing piece of cricket. With Sivaramakrishnan there feeding up the wrong one. The big hit on there.
What a great over. Ever a man deserved a hat-trick, it was this over. Yes, unfortunately, Gavaskar was too far in. So he should have been on the fence. So he has gone the big hit against the wrong one. Survived. This one's in the air, it clears the young lad's head. What an over. Shastri to Tahir Nakash. आप इंडियन इन्वेस्टर हो और इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, पर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड क्यों रहे? ग्लोबल ईटीएफ्स के थ्रू आप यूएस और चाइना जैसे Real trouble. 8 for 142. What a great pair of hands this little keeper has. Obviously Tahir in trouble, hitting against the spin. Went for the big hit over the top of mid-off. The ball turned slightly, caught the edge of the bat, and Vishnu very wide on the offside. So Tahir Nakash out for 10, 8 for 140. Anil Dalpat, the keeper, faces the leg spinner Siva Ramakrishnan. Out! Yes, he's got another one. Beautifully bowled. He threw it up. He went the big hit through cover. Shastri this time didn't let the young lad down. Pakistan reeling against spin here at the Melbourne Cricket Ground. Again, that ball thrown up wide of the off-stump. It was a wrong one, and it was smashed straight at the hands of Shastri at cover. So that's victim number 18 for the spinners, and Siva picks up another wicket. Anil Dalpat out without scoring. Beautiful piece of bowling. He threw it up, held it back. The batsman didn't get to the pitch of the ball. Well caught at cover. It's out for a duck. It's 9 for 145. Just 2 overs remaining. India bowled the West Indies out for 140 in that final of the World Cup. I suppose Pakistan will have the advantage of the bowling under lights. Oh, and they've got away with that. It wasn't a very good piece of running. Seem just paired off without telling Wasim Raja what he was doing. They've got away with it. Pakistan with a run rate of 3.38. So Gavaskar is afforded that luxury with such a low run rate, and also the fact that he has a very skillful leg spinner. He's beaten not only the batsman, but the keeper. The ball's not coming from everywhere. It's going to be Ravi Shastri who gets there first. So Siva has got 5 balls for us to take the wicket and give India the honour of bowling out the opposition 5 times. Ball hit. 1 bounce over the fence. Good shot from Wasim Raja. Pakistan made 183 against India in the preliminary round match. So for the first time, India haven't bowled out the opposition. They've gone very close. 9 for 176 after 50 overs. As I mentioned, Pakistan made 183 in their previous contest here at the MCG. Well, 176 might seem a very big total. It certainly won't seem a very big one to the Pakistanis, but it still has to be made by the Indians. I thought the Indians bowled really well out there, particularly Kapil Dev, and that's the reason for Pakistan having that scoreline of 9 for 176. At least they got up to get through their full 50 overs. At one stage it looked as though they might well be bowled out for 40. Top score of Javed Miandad, 48. Imran Khan, 35. That was a good partnership, 68 in 22 overs, even though it took a little bit of time. Looked as though it was going to pull them round and give them a chance of getting 200 or 210. And the last wicket, the unbroken partnership, Wasim Raja and Asim Hafiz, 31 in just 8 overs. The bowling figures, Kapil Dev, magnificent. 9 overs, 1 maiden, 3 for 23. He moved the ball in the air and off the seam again. Chetan Sharma, 1 wicket, coming in to replace
pick-up play now in the second over. Azim Hafiz, the left-hander, is the bowler, bowling to Ravi Shah. That one's hit past the bit off and down towards the boundary. Desperate stuff by the Pakistanis. Salim giving chase up that magnificent off drive from Ravi Shastri. Went into it, he punched it straight, the left arm over the wicket bowl where the ankle was there, and he kept the elbow up and punched it straight down the big Melbourne cricket ground. Salim desperate to cut off that run as he slides into the steel pickets and knocks it back. A brilliant piece of fielding. This is his fifth over. He's bowled 4 prior to this and conceded only 2 runs, and so he's been very economical. But they're not up against many runs, and so they'll need to take some wickets early on, especially to put a little bit of extra pressure on the Indians. That's in the air into the gap, but wicket once again cut him over by the fieldsman. One of the problems Jarvid now has is whether to perhaps keep him going for a little longer or to introduce someone else. Dasa has been the man who's picked up a fair few wickets for the Pakistanis. It'll be long, I should think, before he's brought to the attack. That's a lovely shot by Shrikant. Worked away through the gap on the onside. Shrikant flying up and down the pitch there. Collect themselves 3-5 from that over. Good one for the Indians. No wicket for 14. This now is the 10th over. He's away. Beautiful stroke. Straight over the top. Nice way to break away. Absolutely magnificent shot there from Shrikant. Really has been tied down. I think the plan has been to bowl short to him. Well, I was going to say they made the mistake of pitching it up, but it wasn't a half volley. बारह गेंदों पर 44 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। चलिए पहली गेंद रायन बर्ली स्कोर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ। 12 गेंदों पर 44 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। चलिए पहली गेंद रायन बर्ली स्कोर के लेकर आएंगे। इस बार कट कर दिया इस गेंद को गेंदर गैप पे और गेंद जाएगा 4 रन के लिए। बाउंड्री लाइन के बाद वैभव सूर्यवंशी का 9वां चौका इस इनिंग्स का। जबरदस्त शॉट था, इस बार ड्राइव किया था इस गेंद को और गैप में खेलकर चौका हासिल किया। चौके के साथ स्टार्ट किया ओवर का वैभव सूर्यवंशी ने। इंडिया का स्कोर पहुंचा 185 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर 11 गेंदों पर 40 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चौके के साथ स्टार्ट किया ओवर का वैभव सूर्यवंशी ने। चलिए अब यहाँ पर दूसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। 11 गेंदों पर 40 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। चौके के साथ स्टार्ट किया ओवर का वैभव सूर्यवंशी ने। चलिए अब यहाँ पर दूसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। 11 गेंदों पर 40 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चौके के साथ स्टार्ट किया ओवर का वैभव सूर्यवंशी ने। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 86 रन पर पहुंच चुके हैं। 14 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर दूसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। 11 गेंदों पर 40 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। चलिए दूसरी गेंद वहां पर अब रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। 11 गेंदों पर 40 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चलिए अब यहाँ पर दूसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर
वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। दूसरी गेंद पर वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने इस गेंद को ऑफसाइड की तरफ कट किया, गैप में खेलकर वहां पर सिंगल लिया। स्ट्राइक रोटेट के श्रेयस अय्यर को इंटेलिजेंट बैटिंग वहां पर हमें वैभव सूर्यवंशी की तरफ से देखने को मिलती है। बाउंड्री आई थी, नेक्स्ट बॉल पर सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट के श्रेयस अय्यर को। अब यहाँ पर बॉलर रायन बर्ली यहाँ पर अंडर प्रेशर दिखाई देते हुए अब यहाँ पर 10 गेंदों पर 39 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 87 रन पर पहुंच चुके हैं, 13 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर तीसरी गेंद रायन बर्ली ओवर की लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। 10 गेंदों पर 39 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर तीसरी गेंद रायन बर्ली ओवर की लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। 10 गेंदों पर 39 रन अभी भी रिकॉर्ड है। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। अभी तक टोटल यहाँ पर 5 रन आ चुके हैं 100 ओवर से। अभी तक टोटल यहाँ पर 5 रन आ चुके हैं 100 ओवर से। चलिए अब यहाँ पर तीसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। 10 गेंदों पर 39 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर तीसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। 10 गेंदों पर 39 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर तीसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। 10 गेंदों पर 39 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। चलिए अब यहाँ पर तीसरी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे। इस पर कट कर दिया इस गेंद को गेंदर गैप पे। जबरदस्त वहां पर हमें फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। फील्डर ने बाउंड्री लाइन पर डाइव लगाकर चौका सेव किया, लेकिन इस दौरान 3 रन वहां पर चुरा लिया श्रेयस अय्यर ने। एक और ट्रिपल आया, इंडिया का स्कोर पहुंचा 189 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर 9 गेंदों पर 36 रन अभी भी रिक्वायर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। एक और ट्रिपल आया। अभी तक टोटल यहाँ पर 8 रन आ चुके हैं 100 ओवर से। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 87 रन पर है, 13 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। 9 गेंदों पर 36 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। 9 गेंदों पर 36 रन अभी भी रिकॉर्ड है। अभी भी ये मैच किसी भी टीम की तरफ यहाँ से जा सकता है। दोनों टीमों के लिए जीत काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। 9 गेंदों पर 36 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। 9 गेंदों पर 36 रन अभी भी रिक्वायर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। चलिए अब यहाँ पर चौथी गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। इस पर कट कर दिया इस गेंद को गेंदर गैप में 2 रन की गोल है और दूसरा रन भी आसानी से वहां पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट। एक और डबल आया, इंडिया का स्कोर पहुंचा 191 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 89 रन पर पहुंच चुके हैं, 11 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर 8 गेंदों पर 34 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर 8 गेंदों पर 34 रन अभी भी रिक्वायर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। अब यहाँ पर 8 गेंदों पर 34 रन अभी भी रिक्वायर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चलिए अब यहाँ पर 5वीं गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। अभी तक टोटल यहाँ पर 10 रन आ चुके हैं। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 89 रन पर है, 11 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। चलिए अब यहाँ पर 5वीं गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हूँ। 8 गेंदों पर 34 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। चलिए अब यहाँ पर 5वीं गेंद रायन बर्ली ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे।
काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। चलिए अब यहाँ पर 5वीं गेंद रायन बर्ली स्कोर की लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। 8 गेंदों पर 34 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ पर 5वीं गेंद रायन बर्ली स्कोर की लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। 8 गेंदों पर 34 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। चलिए अब यहाँ पर 5वीं गेंद रायन बर्ली स्कोर की लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। इस बार निकल कर आए पीटी, उसका गेंदर फार्मर गेंद जाएगा सीधा स्टैंड में। वैभव सूर्यवंशी का 7वां छक्का इस इनिंग्स का। जबरदस्त शॉट था, इस बार निकल कर आए पीटीयूज किया और इस गेंद को पहुंचाया 6 रन के लिए सीधा स्टैंड में। इंडिया का स्कोर पहुंचा 197 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर 7 गेंदों पर 28 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। 7वां छक्का वहां पर हमें वैभव सूर्यवंशी की तरफ से देखने को मिला। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 95 रन पर पहुंच चुके हैं। 5 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। 7 गेंदों पर 28 रन अभी भी रिकॉर्ड है। चलिए लास्ट गेंद यहाँ पर अब रायन बर्ली स्कोर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। अभी तक टोटल यहाँ पर 16 रन आ चुके हैं। 7 गेंदों पर 28 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को मैच जीतने के लिए। चलिए लास्ट गेम यहाँ पर अब रायन बर्ली स्कोर के लेकर आएंगे और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। दूसरा टीम पहले दिन 264 रुपए आए, सोचा कोई गलती होगी। दूसरे दिन फिर आए। मेरा नाम दिनेश है, मैं कार कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता। 7 गेंदों पर 28 रन अभी भी रिक्वायर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। चलिए लास्ट गेंद वहां पर अब रायन बर्ल करने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। 16 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए लास्ट गेंद यहाँ पर अब रायन बर्ल करने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर होंगे। 7 गेंदों पर 28 रन अभी भी रिकॉर्ड है। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। चलिए लास्ट गेंद इस ओवर के लेकर आएंगे। इस बार कट कर दिया इस गेंद को, गेंदर क्या फिर गेंद जाएगा 4 रन के लिए। बाउंड्री लाइन के बाद वैभव सूर्यवंशी का 10वां चौका इस इनिंग्स का। चौके के साथ एंड किया इस ओवर का वैभव सूर्यवंशी ने। 19 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ। इंडिया का स्कोर पहुंचा 201 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके साथ 200 क्रॉस कर चुके हैं वहां पर इंडिया की टीम। 19 ओवर के एंड पर 201 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर का यहाँ पर खेल कंप्लीट हो चुका है। चौके के साथ एंड किया इस ओवर का वैभव सूर्यवंशी ने। अब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 99 रन पर पहुंच चुके हैं। 1 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। 10वां चौका वहां पर हमें वैभव सूर्यवंशी की तरफ से देखने को मिला है। 10वां चौका वहां पर हमें वैभव सूर्यवंशी की तरफ से देखने को मिला है। अब यहाँ पर 6 गेंदों पर 24 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। इस ओवर से टोटल यहाँ पर 20 रन आए हैं। ओवरऑल काफी शानदार ये ओवर रहा यहाँ पर इंडिया के लिए। अब यहाँ पर 6 गेंदों पर 24 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। अभी भी ये मैच किसी भी टीम की तरफ यहाँ से जा सकता है। वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 99 रन पर है। 1 रन की दूरी पर है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। 6 गेंदों पर 24 रन अभी भी रिकॉर्ड है। चलिए एक और बॉलिंग चेंज वहां पर हमें जिम्बाब्वे की तरफ से देखने को मिलती हुई। अब यहाँ पर ब्रैड एवंस वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर। पहली गेम ब्रैड एवंस इस ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। 6 गेंदों पर 24 रन अभी भी रिकॉर्ड है। चलिए अब यहाँ पर पहली गेंद ब्रैड एवंस इस ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। श्रेयस अय्यर अब तक यहाँ पर 5 होकर 5 छक्के लगा चुके हैं। तो वहीं वैभव सूर्यवंशी अब तक यहाँ पर 10 होकर 7 छक्के लगा चुके हैं। चलिए पहली गेंद ब्रैड एवंस इस ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे। 6 गेंदों पर 24 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। काफी क्लोज कंपटीशन वहां पर हमें देखने को मिलता हुआ। चलिए पहली गेम ब्रैड एवंस इस ओवर के लेकर आएंगे। इस बार कट कर दिया इस गेंद को, गेंदर क्या फिर गेंद जाएगा 4 रन के लिए। बाउंड्री लाइन के बाद श्रेयस अय्यर का 6वां चौका इस इनिंग्स का। जबरदस्त शॉट था, इस बार ड्राइव किया था इस गेंद को और गैप में खेलकर चौका हासिल किया। चौके के साथ स्टार्ट किया इस ओवर का श्रेयस अय्यर ने और इसी के साथ 200 क्रॉस कर चुके हैं वहां पर इंडिया की टीम। इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 205 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 19.1 ओवर का यहाँ पर खेल हो चुका है। अब यहाँ पर 5 गेंदों पर 20 रन अभी भी रिकॉर्ड है इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। चौके के साथ स्टार्ट किया इस ओवर का श्रेयस अय्यर ने। चलिए अब यहाँ पर दूसरी गेंद ब्रैड एवंस इस ओवर के लेकर आएंगे और यहाँ पर श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर होंगे।
5 गेंदों पर 20 रन अभी भी रिक्वायर्ड है। दूसरा T20 मैच है सीरीज का। श्रेयस अय्यर का 6वां चौका वहां पर हमें देखने को मिला।